morning from Mumbai airport. Well, there has been some crazy chaos today at the airport क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी for some very strange reason. But anyway, मेरी flight यहाँ मुंबई से दिल्ली है and then from Delhi I will be going directly to Kathmandu. So फिलहाल तो I'm just waiting for my flight to Delhi. I'm just waiting at the boarding gate और थोड़े टाइम में मेरी फ्लाइट जाएगी. आई एम नॉट वेरी श्योर अगर इफ़ आई हैव सम टाइम टू कैच अप सम कॉफ़ी. मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है बट let's see. It's a first things first. When you come to the airport, you might want to change your Indian rupees into Nepalese rupees क्योंकि वहाँ पे currency accept नहीं होती. मतलब होती है Indian rupees, but you will need denominations of 100 only. वहाँ पे 500 या 2000 की नोट्स नहीं चलती. ऑल्सो अगर वहाँ पे आपने ATM से विड्रॉ किया तो आपको 400 से 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे. तो जब आप मुंबई एयरपोर्ट आते हो यू कैन चेक फॉर द करेंसी रेट. बट यूजुअली जो एयरपोर्ट की करेंसी रेट्स होते हैं दे आर यूजुअली हायर दैन व्हाट यू वुड गेट इन योर ओन बोर्डिंग सिटी. तो मैंने जो मेरी करेंसी है वो मुंबई में ही एक्सचेंज करवा ली थी. सो आई सजेस्ट इवन यू डू दैट. इसलिए मैंने यहाँ पे पूछा नहीं है. एनीवे आई सी यू गाइज वंस वी बोर्डिंग द फ्लाइट एंड वी रेडी टू टेक ऑफ टू दिल्ली. I don't know what is it about airplanes. क्या आपको भी किसी फ्लाइट पकड़ने से पहले या फ्लाइट में बैठने के बाद ओवरवेलमिंग लगता है? एंग्जाइटी बट एक्साइटमेंट ऑल एट वंस. मुझे तो आज भी हर फ्लाइट के दौरान ऐसा ही कुछ लगता है. नेपाल had been on my list for a very long time, so I think इस बार एक्साइटमेंट ज्यादा थी. अच्छा, तो सोशल मीडिया पे आप सबसे कनेक्टेड रहना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So as soon as I landed in Nepal, I headed to their N-Cell kiosk, जहां मैंने अपने लिए एक लोकल सिम खरीदा, along with an internet plan for a week. बस एक फॉर्म फिल करना होता है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो देना है एंड डन. So hello and welcome to नेपाल. मैं अभी नेपाल के एयरपोर्ट पे ही हूँ. मैं काठमांडू के एयरपोर्ट पे ही हूँ एंड यहाँ से वी आर राइट नाउ गोइंग टू लुम्बिनी जहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ था. सो दैट्स द प्लेस. बट लुम्बिनी फ्रॉम हियर फ्रॉम द एयरपोर्ट इज अबाउट अ 4-5 आवर का ड्राइव. सो वी गोना बी स्टॉपिंग बीच में फॉर लंच समवेयर एंड देन हेडेड डायरेक्टली. सो so then we're going to be going directly to Lumbini. So all that and more packed in this episode. Stay tuned for that and a lot more. लुम्बिनी में हर साल हजारों टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आते हैं. एंड क्या आपको पता है कि अब इसको एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी बताया गया है. यू कैन विजिट श्राइन्स फ्रॉम म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया एंड इवन फ्रांस. इट विल ऑलमोस्ट फील लाइक यू आर ट्रैवलिंग टू साउथ ईस्ट एशिया. ओके, तो लुम्बिनी जाते जाते एक पिट स्टॉप लिया है. इट्स वी टेकन अ चाय कॉफ़ी ब्रेक आफ्टर दैट लंच ब्रेक एक्चुअली, क्योंकि तब से हमने कोई ब्रेक ही नहीं लिया था. एंड लाइक आई टोल्ड यू दिस इज़ अ 7-8 आवर का ड्राइव. सो वी माइट रीच एट लाइक 1 AM इन द नाइट. तो वी थॉट एक चाय कॉफ़ी ब्रेक बनता है. एंड वी फाउंड दिस रियली प्रीटी स्पॉट विच हैज़ लाइक अ रियली नाइस रिवर ओवर हियर विच इज़ नॉट वेरी क्लियर राइट नाउ बट या. सो सोचा यहीं पे चाय कॉफ़ी पी ले एंड देन ऑनवर्ड्स टू लुम्बिनी. और ड्राइव करते करते रात हो गई तो वी स्टॉप बाय फॉर डिनर व्हिच वाज अ नेपाली थाली. इससे बेहतर और लोकल स्टार्ट आई थिंक नहीं हो सकता था इस ट्रिप का. So finally after a 10-hour drive हम लुम्बिनी पहुंचे हैं एंड आई एम डेड टायर्ड क्योंकि मैं कल रात को 2:30 बजे से उठी हुई हूँ एंड अभी रात के 2 बजे है. सो लिटरली 24 hours and I have not caught on sleep, so I am dead tired. The hotel is right here. I'm just going to go to sleep right now because I have no energy. I'll show you the place tomorrow morning when there's more light. See you in the morning. Good night. Hello and a very good morning from Lumbini. Well, सुबह के 9 बजे एक्चुअली, नॉट 8:30, 9 बजे है और मैं जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए बिकॉज 9 o'clock इज़ आवर ब्रेकफास्ट कॉल टाइम. सो दैट इज़ द रूम दैट आई शोड यू क्विकली लास्ट नाइट. इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी एक्चुअली. इट्स अ वेरी लार्ज एरिया. सो एनीवे मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए. टुडे आई एम गोइंग टू गो इन लुम्बिनी इटसेल्फ. लुम्बिनी में बहुत जो पॉपुलर जगह है वो यहाँ के 2 टेम्पल्स है. सो आई एम गोइंग टू बी गोइंग देयर टुडे एंड देन वी विल बी हेडिंग फॉर पोखरा टुडे इटसेल्फ. सो अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने. ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी होंगी और रेडी होने के बाद वी विल बी लीविंग टू एक्सप्लोर अ लिटिल बिट ऑफ लुम्बिनी एंड देन ऑनवर्ड्स टू पोखरा.
ओके तो मैं रेडी हो चुकी हूँ अभी, ब्रेकफास्ट खा लिया, केम बैक टू द रूम, गॉट रेडी, ऑल ऑफ दैट. Outfit of the day. So I'm pretty much ready, and now I will be heading out to go to those temples that I was telling you guys about. So these temples are popular temples in Lumbini. I'll tell you more about the temples and the relevance of it and why we're going there in a bit, but अभी फिलहाल निकलते हैं क्योंकि होटल से भी चेकआउट करने का टाइम हो चुका है. So let's go. Oh, but before we head out, hotel को एक बार देख लो, in case you ever want to choose to come and stay here. It opens with a grand entrance and has a huge area with comfortable rooms and a good restaurant. खैर किसी नए शहर में घुल मिल जाने के लिए I feel the best way is to travel in its local transport. नेपाल में भी आपको ये टुक टुक मिलेंगे and I highly suggest that you get around in one of these. With a house full in our tuk tuk, मैं हमारे ड्राइवर के साथ आगे ही बैठ गई. तो जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ लुम्बिनी में you'll find a number of temples from across different South Asian countries. तो मैं पहुंच गई to the Thai temple. This one is so beautiful and the minute you enter the premises, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप थाईलैंड आ गए हो. These temple structures are worth visiting for their beautiful and intricate architecture और जिस तरह से इन्हें मेंटेन किया गया है. यहाँ एक बड़ा सा मार्बल स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर गॉड का आइडल रखा है. And the temple is definitely a must visit in Lumbini according to me. यहाँ से निकलकर I headed to the Maya Devi temple in Lumbini, जहाँ apparently बुद्धा का जन्म हुआ था. इस टेम्पल में सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट है, so I couldn't film inside the main temple area, जहाँ they've kept a small stone जहाँ बुद्धा was delivered. Well, I visited Lumbini in May and I must admit it was scorching hot during the day. And Lumbini as a destination is anyway extreme with its climate. So make sure you visit during more pleasant months like the winters. Anyway, आज लुम्बिनी से निकलकर it's time to head to Pokhara. And रास्ते में I took a little pit stop for some coffee and some chicken momos. अगर आप भी कहीं pit stop ले रहे हो, then make sure you try out the momos. They are available at almost everywhere. ओके सो पोखरा फाइनली पहुंच गए हैं. पोखरा में चेक इन कर दिया है. चेंज एज यू कैन सी. आई विल शो यू द होटल इन द मॉर्निंग अगेन जस्ट लाइक आई डिड इन लुम्बिनी, क्योंकि यू नो सीइंग अ प्लेस इन डे लाइट डज मोर जस्टिस टू इट. दैट्स व्हाट आई फील. बट एनीवे यहाँ पे द बेस्ट पार्ट अबाउट पोखरा इज़ कि यहाँ पे एक पूरी लेन है. there's like an entire lane which is like a party hopping sort of a lane. It looks exactly like the lanes, like the party lanes you have in Bali and you have in Bangkok. Exactly like the replica. The shops are also like that. सारे Chinese shops है, Chinese restaurants है, and lined up with like really good bars and pubs. तो मैं अभी वहीं पे चलने जा रही हूँ. I'm going to pick up a local beer and walk the street. So I'm going to take you guys along with me. So let's go. The market street on Pokhara is really the center point of this location. Pokhara अपने scenic beauty के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन it also has a great and bustling nightlife, जैसे कि ये market street जहाँ अलग-अलग restaurants और pubs मिलेंगे to spend an evening at. So I sat at a local restaurant to try their drink, which is called Tungba.
इसे मिलेट से बनाया जाता है. So the server basically gets a flask which is filled with millet up to the brim. इसमें hot boiling water add किया जाता है and it is consumed after 5 minutes. Imagine a red wine being mixed with strong beer. इसका taste बिल्कुल वैसा था. It takes a few large sips for the taste to grow on you, but once it does, then there's no going back. And of course, momos it had to be. So after dinner, I called it a day. So here's a quick view of the hotel in Pokhara before we head out. Today, I'm heading to the Shanti Stupa. Built as a symbol of peace, the stupa is 1,100 meters high and was built in 1973. Hello and good morning from Pokhara, where आज I've been having a very slow morning. आराम से उठे, आराम से रेडी हुए, but आज पोखरा में देखने के लिए बहुत सारी जगहें हैं. So just headed there. सबसे पहले on today's list is the Shanti Stupa, which is right in front of me. I'll show it to you. थोड़ा जब हम ऊपर जाएंगे, हमने गाड़ी हमारी just पार्क की है and now it's like a 10-minute uphill climb out there on the top. So that's where I'm headed to. So let me guys take you to the Shanti Stupa और फिर अगली जगह जो जब हम वहाँ पहुँचेंगे I'll tell you a little more about it. फिलहाल let's go to the stupa. The view from the stupa is very beautiful, but be mindful कि यहाँ पहुँचने के लिए you have to climb a flight of steep stairs. Alright, that was quite a climb. 10 minute कहते हैं, for 10 minutes is for somebody who's not going to take stops in between and just continuously climb, तो 10 minute लगेंगे, but otherwise it's quite an exhausting because stairs, it's not like there's rocks or slippery or anything like that, and the stairs are a little steep. Anyway, I finally reached the beautiful stupas right behind me, as you can see. Let's get a little closer to the stupa and have a look at it. So the cucumbers here are like humongous sized. I'll just show it to you in a second, but Anuj got us all to, Anuj from Wonder Woman got us to enjoy. He's there hiding somewhere. But it's like huge portions, huge sized cucumbers, which is, yeah, this is the size of the cucumber. I have never seen it. Initially when I saw it, I thought it's lauki, it's dudhi, but it's not. It's cucumber. It's really nice with the chutney. They have some chutney that they put on it. Oh, it's really nice. Next up is the Davies Waterfall. A gorgeous waterfall. लेकिन क्या आपको पता है कि इसका नाम Davies Waterfall क्यों है? Well, according to the locals here and one amongst the many stories, that a lady by the name Devi once committed suicide here by falling, and ever since then it's been named so. Quite an irony ना कि ऐसे unfortunate incidental site पे भी कितनी खूबसूरती मिल सकती है. Pokhara has a different plan for me in terms of the weather, and while I was at the falls itself, it started to suddenly pour quite heavily. So I just sat indoors for a while to wait for the rain to stop. और शाम होते ही I decided to head back to the market street क्योंकि आज मेरी पोखरा में last night थी.
So I decided to walk around and explore a bit by myself. Alright, so after that long day of touring around, eating and drinking in Pokhara, मैं अभी पोखरा के जो मार्केट स्ट्रीट है वहीं पे हूँ. I'm just taking a walk. मेरा जो होटल है वो मार्केट स्ट्रीट पे ही है, so it's really easy for me to just get out. So मैं फ़िलहाल मार्केट पे चल रही हूँ. It's such a bustling and a busy street. It's so beautiful. It's so nice. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है आके. You know, like it's look at this. काफ़ी हैपनिंग सा स्ट्रीट है. यहाँ पे बार्स है, पब्स है, so you can do pub hopping. There are a number of restaurants to eat from, dessert shops and all kinds of food that you can think of. So there's a lot to actually do here. It's very interesting. आप शॉपिंग भी कर सकते हो, काफ़ी सारी शॉपिंग की भी जगह है. तो मैं तो फ़िलहाल ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही हूँ, जस्ट वॉकिंग अराउंड द लेन. सो या लेट्स सी, लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आपको अपने साथ लेके जाती हूँ टू काइंड ऑफ शो यू हाउ दिस लेन लुक्स लाइक राइट नाउ. अभी उस लेन पे चलते चलते मैं एक पिज़्ज़ेरिया में आई हूँ, which is called as Davies Pizzeria. So that's where I am. The pizzas looked amazing. They were like serving pizzas while I was walking past the place. मैं अपने होटल की तरफ चल चुकी थी, but pizzas देखते हुए बाद में वापस रिटर्न आई यहाँ पे. So it just looks amazing. So I'm ordering pizza. The Greek pizza, please, just without onion. And Greek pizza, no. मैंने अपने पिज़्ज़ा का ऑर्डर भी दे दिया है. आई वाज फीलिंग सुप्रीमली हंग्री. अभी आई थिंक सिर्फ 7 बजे है ना. फीलिंग रियली हंग्री था. अभी आई हूँ और मुझे पिज़्ज़ा दिख गया. तो पिज़्ज़ा तो कभी बना कर नहीं सकते. तो ताकि माइट एज वेल. तो या लेट मी शो द प्लेस. Well, some pizza, some local Gorkha beers, good music and dancing later. It was time for me to end the day. Hello and a very good morning from Pokhara. Today is the second morning in Pokhara. कल रात को after that party मैं obviously रूम पे आई थी, रूम पे आके सो गई थी. And आज actually सुबह 4 बजे उठ के सनराइज़ देखने का प्लान था. But in the morning when we all woke up at like 4 AM, it was supremely cloudy. इतना ज़्यादा cloudy था कि सनराइज़ देखने का चांस मिलने ही नहीं वाला था. So then we had to kind of chuck that plan and we decided to leave a little late. तो अभी मैं थोड़े टाइम पहले ही बस उठी हूँ और हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए. So breakfast has been had और मैं अब रेडी हो चुकी हूँ नहा के. And now I am heading for काठमांडू टुडे, लाइक आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग. लेकिन काठमांडू जाने से पहले यहाँ पे एक लेक है, फेवा लेक, जो पोखरा में ही है. सो आई एम गोइंग टू बी गोइंग देयर, सीइंग द लेक, क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश थी तो कल देखने नहीं मिला था. तो आज लेक जाते जाते फिर निकलेंगे टू काठमांडू. से लेट्स गो. The Fewa Lake is a beautiful spot to go sit at or go boating if you'd like to. The boats take you to a local temple in the center of the lake. Lekin if you choose to stay outside just by the lake, you'll see the Annapurna peak reflecting in the lake and it is quite a sight. यहाँ काफी सारे seating areas भी बनाए गए हैं where you can just sit by and spend some calming time.
खैर, मेरा तो यहाँ से निकलकर काठमांडू की ओर जाने का आज टाइम आ चुका है, एंड ऑल्सो टू एंड दिस एपिसोड। लेकिन आप बने रहना, बिकॉज इन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल बी टेकिंग यू अक्रॉस ऑल ऑफ काठमांडू टू ट्राई सम ऑफ द मोस्ट लोकल थिंग्स विद माय न्यू नेपाली फ्रेंड्स। Until then, goodbye.